Hi guys, myself Kunal and this is my video on introduction to AI and ML. So इसमें हम बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे AI और ML के बारे में and let's clear our concepts of on what is AI and what is ML. AI and ML का बहुत यूज है. It's used everywhere like supply chain, marketing. आप कोई भी गूगल पे किसी तरह का कोई कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको उसी तरह की एड्स जो है वो साइड में शो होने लग जाती हैं. इवन इफ यू गो ऑन अदर पेजेस आल्सो, लाइक इफ यू सर्च समथिंग ऑन Amazon, if you go to Amazon browser, if you go to Amazon browser, you search something there, okay, एंड अब आप देखेंगे कि आपको हर पेज पे, इवन इफ देन यू गो टू Geek for Geeks page on your study page, you can see that there are similar kind of ads there on your Geek for Geeks page, okay, that for the item that you were searching here. So all this is AI and ML, okay. So मैं इसको इरेज कर देता हूँ. तो सबसे पहले लेट्स गो विद द बेसिक डेफिनेशन कि AI है क्या. If a computer program, AI is a computer program that does something smart, ठीक है. So अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम को स्मार्ट करता है, like a computer driving a car, okay, or a computer playing a chessboard. If a computer do it by itself, then all these things are called AI. Now, how we do something smart? Okay, how we do something smart? So smart. If we do something smart, how we call someone smart? हम किसी को smart कैसे कहते हैं? It's because the decision that the person is making are smart. So smartness is implied by its decision. Okay, smart decision means you are smart. Okay. Now, how we make smart decisions? So let's say we are part of this world. Okay, हम दुनिया में आते हैं. We born in this world, then we learn a lot of things, and based on that learning, we make smart decisions. Okay, like if you send a kid to buy some vegetables from the market, he cannot buy good veggies. Okay, but then if you send but then with the time, this kid observe the world, observe कि घर पे खाना कैसे बन रहा है, कौन सी सब्जियां आ रही हैं, and soon it learn from those observations. The kid observe a lot of things, and from those observation the kid learn things, and then when he grow old, when he become an adult, then he is now learn everything, and he can go to the market and buy smart vegetables which are actually good. So this observation actually made the kid smarter. Okay, now let's say, so हमने क्या देखा कि if we draw everything here, so this is a world, this is a world. हम इसमें बहुत कुछ सीखते हैं. We learn many things and then we do decisions. This is basically decision. Okay.
So let's say, for example, let's take another example of this learning process. Let's say this is your home, and you are going to your office. This is your office building. Okay. Now there are two routes from your home to your office. Okay. This is route A. This is route B. The route A is actually a small route. It's take 20 minutes in with this. You take 20 minutes in normal days, and route B is actually a little busy. So you take 40 minutes if you go from route 2 in normal days. Okay. But हमने ऑब्जर्व किया कि with time we generally always go from route A, but हमने ऑब्जर्व किया कि संडे को, because there are many shops in this route, or there is a temporary market in this route which actually get open on Sunday only. तो संडे को हमें इस राउट से 45 मिनट्स लगते हैं, या लेट्स से 50 मिनट्स लगते हैं. ठीक है. तो अब संडे को हमने राउट बी से जाना शुरू कर दिया. ठीक है. एंड आफ्टर मैनी ईयर्स, लेट्स से आफ्टर 1 ईयर, ये हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस हो जाती है कि फ्रॉम मंडे टू सैटरडे टू पॉइंट ए, from your home to your office. Monday to Saturday, you take this route A, and on Sundays, you take this route B. Now, if someone, it might be possible कि अगर कोई आपसे पूछे after 1 year कि क्यों आप संडे को route B का यूज करते हो, so you do not remember the data. You do not remember the data, but you have built a model which says कि okay, संडे को आपको route B से जाना है और Monday to Saturday you need to go from route A. So we actually do not remember the reasons of our actions or our smart decisions, but we remember the decisions. This thing is called, this choosing a smart way is called AI. Let's see. And this learning that we made, that okay, from many observations, we made this learning that Monday to Saturday, I need to go from route A, and on Sundays, I need to go to route from B. This is part of my machine learning. Okay. So I guess I'm making my point clear. Let's take one more example over here. Okay. So अगर अब मैं वापस से ड्रॉ करूं हमारा इनिशियल डायग्राम, so we are part of this world, then we did a lot of learning, and now we are making smart decisions. So this complete process of learning and doing smart decisions, actually performing the task, is called AI. And this process of learning is called machine learning. Machine learning. So I guess आपका थोड़ा डाउट क्लियर हुआ होगा कि क्या AI और क्या machine learning है. So in short, if I watch a movie, if I go to theater, I watch a movie here, और अगर वो मैं मूवी आके आपको बता रहा हूँ, if you are telling, if a person A is telling a person C
the movie in its own words, then it's called observation. Okay, but if you watch a movie, you record this movie and then you show it to a person B, or person A watch the movie, record the movie, and then show it to person B, then this is called actual data. This is called actual data. So ये difference है between data and observations. Okay. So now let's learn something about machine learning in deep. So कि machine learning और statistics में क्या फर्क है? So with machine learning there also comes statistics. Okay. So let me make you clear with this with one more example. Okay. So let's say मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया एक सिटी के अंदर. ओके, एंड मुझे इस रेस्टोरेंट का प्राइस मेन्यू लिस्ट तैयार करनी है. बेसिकली हर आइटम का मुझे प्राइस लिस्ट तैयार करनी है. सो मैं कैसे तैयार करूंगा? सबसे पहले लेट्स से फॉर अ मंथ I keep on changing the price, or let's say I keep on changing the price for a year for every 1 week. Okay, so मैंने एक चार्ट बनाया प्राइस वर्सेस सेल्स का. ठीक है, अब हो सकता है मेरा रेस्टोरेंट किसी ऐसी जगह पे हो जहां सारे रिच लोग हों और वो लो प्राइस पे बहुत कम सेल्स शो करती हो मेरी. ठीक है, या मेरा रेस्टोरेंट किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे आसपास बहुत रिच लोग नहीं रहते, एवरेज लोग रहते हैं. So if I give a normal food at normal price, then my sales will go higher. Otherwise, my sales will go down. So depending on the locality with price and sales, let's say I get this data. If I plot it here, on different days, let's say I get this data. For example, for simplicity, मैं मान लेता हूं कि ये जो है डेटा वो एक लीनियर मॉडल फॉलो करता है. okay. मुझे क्या निकालना है? सो लेट्स से मेरा जो इसका मॉडल की डेफिनेशन आई लीनियर मॉडल की, वो आई सेल्स इज इक्वल टू 1000 टाइम प्राइस minus let's say 50 rough values for a linear equation. Okay, and now my profit is, what is my profit? This is my price, don't get confused here. This is my price, this is my sale. Okay, now what is my profit? Profit is actually price minus cost, right? जो भी मैंने प्राइस रखा उसमें से अगर मैं कॉस्ट को माइनस करता हूं तो मेरा प्रॉफिट है. नाउ आई नीड टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट. So from these two equations, I need to maximize my profit. So what I can do is I can draw this type of curve. If I plot this is my price and this will be my sales. Okay, or sorry, this will be my profit. Sales is to price to a linear equation थी. So price is to profit. Because sales भी तो price के साथ हमारी sales vary कर रही है, so profit भी vary करेगा, right? So at this point I find out that my profit is maximum. So मैं क्या करूंगा, मैं अपना प्राइस जो है वो ये प्राइस रखूंगा मेन्यू का,
and I'll earn the maximum profit every time. ठीक है, अब इसमें दो चीजें आती हैं कि how in this situation I have this data, this is my data जो मैंने गैदर किया था, ठीक है, this is my graph which I get from this data. अब बात ये आती है कि there are two things, एक है हमारी मशीन लर्निंग और एक है हमारी स्टैट्स, ठीक है. Now how these two behave differently in this situation, statistics will first ask कि जो डेटा आया है ये किस मॉडल से आया है. So we'll say कि ये लीनियर मॉडल से आया है. Now when what stats will do, stats will simply say okay linear model से आया है, तो stats will try to find this M and C. This is my statistics. So it's linear regression. Statistics what it will do, it will try to first identify कि क्या ये linear model है. अगर ये है तो it will try to find out M and C. On the other hand, what machine learning will do, मशीन लर्निंग कहेगी कि भैया मुझे नहीं पता ये क्या है, ओके, मेरे पास ये ग्राफ था, ठीक है. अब मशीन लर्निंग रिकर्सिवली in a for loop, let's assume for simplicity, in a for loop, try to fit all the models in this data and find out the best fit model. Okay, so पहले ये linear model पे try करेगी, फिर ये quadratic models पे try करेगी, cubic, and when it will find out the best fit, जिसमें हर प्राइस वैल्यू के लिए आपको सेल्स की वैल्यू आ रही है, एक ऐसा मॉडल which can be like this, which can be like this, which can be like this, and it will find out that model by itself, okay, and then then it will take this model for all the future purposes. So अब उस एरिया में कोई भी अगर शॉप ओपन होती है, कोई भी न्यू शॉप ओपन होती है, तो डायरेक्टली वो मशीन लर्निंग के थ्रू अपना प्राइस गेट कर सकता है. दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग डू. ये क्या करती है, आपके हर मॉडल को फिट करने की कोशिश करेगी. स्टैटिस्टिक्स क्या करेगी, वो पहले आइडेंटिफाई करेगी कि ये जो डेटा आया है इसका एक्चुअली मॉडल है क्या. विदाउट दिस मॉडल फॉर स्टैटिस्टिक्स द डेटा इज नॉट गुड. सो एक स्टैटिस्टिशियन के लिए उसको पता होना चाहिए कि ये जो डेटा है ये किस मॉडल से बिलोंग करता है, एंड देन यूजिंग द कैलकुलेशंस, stats calculation, we try to find out M and C, या फिर maxima and minima of the graph. But what machine learning do, it will try to find the best fit model. Okay guys, so let's summarize everything. This is our word. Okay, we learn from this word. हम कैसे learn करते हैं, we get input data, we get observations, okay. So with time we forget about this data, we remember the observations, okay. This is called machine learning, and then from this learning we make decisions. This complete process is called AI.
ये कॉफी रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल था, ऑल्दो, बट आई थिंक इसने आपको कुछ एक्सप्लेन किया होगा. इन माय नेक्स्ट tutorial will take some good examples, some real world examples. ठीक है, और then we'll start from supervised learning. Thank you everyone. Please subscribe and please do like. Okay, thank you.